Hare Krishna and Pranam dear devotees. So I wish all of you a very happy Prabhupada Tirobhav Festival Day. So आज जो है स्पेशल डे प्रभुपाद तिरुभाव दिवस और ये जो दिन है आज के तिरुभाव दिवस और आविर्भाव दिवस, इन दोनों में ये खास रहता है कि जो कृपा है भक्तों की और आचार्यों की वो ज़्यादा मिलती है। तो अगर हम ठीक मूड में, ठीक भाव में कृपा मांगते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कृपा हमें मिलेगी। सो ऑफ कोर्स प्रभुपाद के ना होने का सबको दुख लगता है। हम लोग जब भक्ति में आते हैं, मुझे आप लोगों का पता नहीं, मुझे लगता था कि काश 30-40 साल पहले आया होता तो प्रभुपाद के दर्शन करते, प्रभुपाद से कुछ कम से कम दर्शन ही कर लेते। पर मैं देखता हूँ गुरु महाराज, माय गुरु महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से कि यू आर फॉर्चुनेट बिकॉज हम लोग जो है देयर इज अ गैप। और जो प्रभुपाद थे भी तो ऐसा नहीं है कि सारे भक्तों को पूरे दर्शन मिलते थे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको एक बार ही कुछ दर्शन हुए, एक बार उनकी मेमोरी है कि प्रभुपाद ने हमारी तरफ नजर उठा के देखा था, लाइक दिस। So, but now we have so much opportunity to associate through his Vani and also through his disciples, who has love for Prabhupada. So, वो हम देखते हैं कि जितने प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं उन सब से हम सुनते हैं, करते हैं, तो हमारा जो प्यार है प्रभुपाद के प्रति वो और बढ़ता चला जाता है। और हमारे संघ का तो नाम ही प्रभुपाद कृपा संघ है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभुपाद से अपना संबंध बनाएं, और उस संबंध बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। और उसका संबंध बनाने का तरीका एक ही है कि उसके बारे में सुना जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए, उनके बारे में सुना जाए, और उनके जो निर्देश हैं उनको समझें और उन निर्देशों को पालन करें। तो इस तरह से हमारा जो संबंध है उस व्यक्ति से बनता चला जाता है। और हम पाएंगे कि जब ये संबंध बनता है तो उसका हमारी जो भक्ति है उस पर बहुत ही उसका एक सकारात्मक इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। और कृपा जो है, कृपा आचार्यों की हमेशा मिलती है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे पास कृपा पात्र नहीं है। जो कृपा मिलती है वो सारी की सारी जैसे भरे गिलास से पानी गिर जाता है और डालो, हमारा भी यही हाल है। कृपा आती है पर गिलास जो है पहली अनर्थों से और इच्छाओं से और काम वासनाओं से इतना भरा हुआ है कि वो सारा गिलास में से कृपा उड़ल जाती है। बट आज का जो दिन है ये स्पेशल डे है, तो प्रभुपाद की कृपा से हम अपना कृपा पात्र बड़ा करने को बोल सकते हैं कि थोड़ी सी हमारे सिर पे कृपा मिले। और आप लोगों में से जिसने भी सुबह से लेके अभी तक कोई प्रभुपाद की सेवा की या प्रभुपाद के बारे में पढ़ा या प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, तो आप सोने से पहले उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी आपके चरणों में जो रति है, जो प्रीत है, वो बढ़ती जाए हर रोज, एक परसेंटेज से बढ़ती जाए। इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर कल से हम थोड़ा सा जो है अपनी अपनी साधना में, अपने जप में, अपने पठन में, अपने प्रचार में, किसी भी तरह में हम थोड़ा सा एक गियर चेंज कर सकते हैं। और फिर हम पाएंगे कि उस गियर में चलने की शक्ति जो है वो प्रभुपाद हमें दे देंगे। सो ये है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सो आज जो है अभी हम लीलामृत का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा। आई विल रीड। और रोनी प्रभु कैन यू डू? अच्छा, आई विल डू स्क्रीन शेयरिंग। सो दो पढ़ेंगे और मैं आप डिवोटीज से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग जो है अगर थोड़ा सा शेयर करें प्रभुपाद के बारे में, कुछ भी यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर हार्ट लाइक ए ग्लोरिफिकेशन, तो इट विल बी ए गुड
एक्सरसाइज। हमारी अपनी भी श्रद्धा प्रभुपाद के बारे में बढ़ती है, और दूसरे भी सुन के हमसे प्रोत्साहित होते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर प्रभुपाद के चरण कमलों की जो छाया पड़ी है, उससे हमारे जीवन में कोई अंतर आया है कि नहीं आया। So like this, so we'll begin our session now. So class will be reading in English only today. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesya Kripa Sindhu Vacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Tirobhav Mahamahotsav ki jai. So, ये पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, ये चैप्टर आता है, और ये हम लोग बारी बारी भी पढ़ सकते हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, सो वी कैन रीड टुगेदर आल्सो. और जैसे मैंने आपको बोला कि इट बी नाइस इफ यू कैन स्पीक फॉर 5-10 मिनट्स ऑन प्रभुपाद. कुछ डिवोटीज को आई कुड रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर, और तभी हम अपने हार्ट से कुछ भी बोल सकते हैं. सो ये लीलामृत का 55th chapter है, final lesson. Despite his promise to live, Srila Prabhupada said his life was still in Krishna's hands. Everything was. His free choice did not mean that he was absolutely independent. Rather, the pure devotee's attitude is to freely surrender to Krishna whatever happens. So, ये अगर आप लोगों ने जिन्होंने लीलामृत पढ़ी या प्रभुपाद के अंतिम समय में, तो हम जानते हैं किस तरह से जो डिवोटीज थे, उन्होंने प्रभुपाद ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उससे तो कुछ भी नहीं पा रहे थे, और फिर डिवोटीज का उनका अपने प्रति प्यार देख के उन्होंने फैसला लिया कि ठीक है, मैं खाना शुरू करता हूँ, और उन्होंने जूस वगैरह लेना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि अगर मुझे जीना है तो आई मस्ट ईट. तो डिवोटीज जो हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे थे प्रभुपाद को कि आप कृष्णा के प्योर भक्त हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो कृष्ण मान जाएंगे. सो विच मीन्स प्रभुपाद ने एक बार बोला भी कि कृष्णा ने चॉइस मेरे पे छोड़ दी है कि आप क्या चाहते हो, लाइक दिस. सो तो उसमें उसी के लिए ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि हिज फ्री चॉइस डिड नॉट मीन ही वॉज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट. तो ये हमें एक भक्त में चाहे और भगवान के बीच में जो रिश्ता रहता है, वो ज़रूर रहता है कि भगवान अपने भक्त की इच्छाएं पूरी करते हैं, बट स्टिल जो डिवोटी है, he always remain dependent on Krishna. He doesn't have any of, he may have his choice, but he knows कि Krishna knows best, like this. तो इसमें लिखा है, rather the pure devotee attitude is to freely surrender to Krishna whatever happens. In the mood of gopis, the foremost devotee of Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu prayed, "You may handle me roughly in your embrace, or may make me broken-hearted by not being present before me, but you are always worshipable. You are always my worshipable Lord unconditionally." तो ये जो है शिक्षाष्टकम का लास्ट श्लोक है, और हम में से जो लोग थोड़ा सा भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं, सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है जो शिक्षाष्टकम के श्लोक हैं उनको हम पढ़ें. तो इसलिए शिक्षाष्टकम के श्लोकों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. और
आई डोंट नो कि कहाँ पर उसके ऊपर ये बेनेडिक्शन है शिक्षाष्टकम के ऊपर कि जो भी उसको हर रोज पढ़ेगा उसको प्योर भक्ति मिलेगी। हाँ, ये शिक्षाष्टकम की हाँ बेनेडिक्शन है उसकी शिक्षाष्टकम की। हाँ, सो ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक है। कि आश्लीष्या वा पाद्रताम विनाष्टो माम आदर्शमान मर्म आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा या विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा। ये है कि कृष्ण के प्रति जो आत्मसमर्पण का, तो एक एक करके एक पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक हाँ जो समर्पण है वो एक एक स्टेप और बढ़ता चला जाता है कृष्ण के प्रति। तो उसमें जो लास्ट श्लोक है वो ये है हाँ, कि हे कृष्णा यू मे हैंडल मी रफली इन योर एम्ब्रेस और मेक मी ब्रोकन हार्टेड बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर मी बट यू आर ऑलवेज माय वर्शिपेबल लॉर्ड अनकंडीशनली। तो ये जो प्योर भक्त है भगवान के, उनका भाव भगवान के प्रति ये रहता है। तो तो जो प्रभुपाद की जो अंदर की जो भावना है उसको बता रहे हैं कि उनकी अंदर की भाव कैसा है उस वक्त जब वो एकदम एक तरह से मृत्यु शैया पर ही पड़े हैं। Because the exchanges between the Lord and his pure devotees are always supremely personal, both the Lord and his devotees express desires and individual will. In his childhood Leela, Krishna sometimes breaks Mother Yashoda's butter pot, and sometimes he allows her to catch him and bind him. In any case, the will of the Lord and the will of the devotee are always one in interest, but they are sometimes expressed in the form of a conflict. Similarly, although Srila Prabhupada had promised his devotees that he would stay in the world and defy death, he still remained surrendered to the will of Krishna. So, oneness कैसी होती है डिवोटीज में और भगवान में और उनके शुद्ध भक्तों में कि they are one in the interest, they are one. Both of them, their cause and the interest is one. They have same goal, like this. So sometime goal may be same, but there may be a conflict. So दोनों ही सेवा करना चाहते हैं पर दोनों में कुछ भेदभाव हो सकते हैं उस सेवा के बारे में। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि जो the will of the Lord and the will of the devotees are always one in interest, but they are sometimes expressed in the form of a loving conflict. So कि जैसे आप सोच सकते हैं कि एक भाई है और बहन है और दोनों ही माता को उनके बर्थडे पे कुछ करना चाहते हैं, पर दोनों अलग करना चाहते हैं। भाई कुछ और करना चाहता है, बहन कुछ और करना चाहती है। तो क्या है, दोनों का गोल एक ही है, दोनों का इंटरेस्ट भी एक ही है, बट देयर इज ए लविंग कॉन्फ्लिक्ट हाउ टू सर्व। सो इसी तरह से सो इट्स ए मटेरियल एग्जांपल बट यू कैन गेट। तो इसी तरह से भगवान में और भगवान के शुद्ध भक्त में इंटरेस्ट एक है बट देयर कुड बी ए लिटिल कॉन्फ्लिक्ट हाउ टू डू इट। और जो भक्त हैं वो क्या है, दे आर ऑलवेज स्टिल रिमेंबर्ड surrender to the will of Krishna. Srila Prabhupada had already expressed his surrender in the prayer he had given to his disciples to offer on his behalf. My dear Lord Krishna, if you desire, please cure Prabhupada. By the phrase, if you desire, he was reminding followers of the supreme prerogative of Krishna and was asking them to abide by it, although he was also giving them an acceptable way to petition Krishna. In a similar case in 1967, he had given his disciples another prayer. My master has not finished his work. ये था अमेरिका में जब प्रभुपाद को फिर से हार्ट अटैक आया। एक बार उनको हार्ट अटैक आए थे जब वो जलदूत में यूएसए जा रहे थे और सेकेंड टाइम उनको हार्ट अटैक आया 1967 में, क्योंकि ही वॉज दैट टाइम 70 ईयर ओल्ड और वो प्रचार जो है वो ऐसी एनर्जी से कर रहे थे जो एक 20 साल का व्यक्ति करता है। सो दैट बिकेम वेरी हाई बिकॉज ही वाज ट्रेवलिंग एवरीवेयर and so many services he was doing, so which was way beyond his what body can accept. So 1967 में उनको सेकेंड हार्ट अटैक आया और तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने ये प्रार्थना दी थी, देखिए कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करनी है
कि माई गुरु महाराज ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। क्योंकि उस वक्त मूवमेंट शुरू ही हुई थी। 66 में शुरू हुई थी, 67 के मिड में प्रभुपाद को हार्ट अटैक आ गया था। तो जो इस बार है, प्रभुपाद ने इस बार क्या प्रेयर दी कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा, इफ यू डिजायर प्लीज क्योर श्रील प्रभुपाद। He had said then that Krishna had responded to his prayer, granting the wishes of devotees. Srila Prabhupada himself was responding to the devotees' prayers, and Krishna had given him the choice. But as a surrendered soul, Srila Prabhupada waited for further developments, ever sensitive to Krishna's desire. As Prabhupada had said when invited by Kirtananda to come to his palace in New Vrindavan, Prabhupada saying, let us see which palace I'm going to. So his sense of humor still remains. आप सोच सकते हैं वो एकदम मृत्युशैया पे पड़े हैं. He's on his deathbed. और Kirtanand Maharaj, one of Prabhupada's disciples, he had made in Virginia, in New Vrindavan, very opulent temple. तो कह रहे हैं कि I want to invite you to that palace. अब इसको Prabhupada palace बोलते हैं. Or Prabhupada is saying, let us see which palace I am going to, which means yours or the palace of Krishna. As a loving tension can sometime exist between the Supreme Lord and his pure devotees, so now a similar tension existed between Prabhupada and his followers. Prior to his disciples' desperate petition at his bedside, Srila Prabhupada had seen his duty as instructing his disciples in how to die. Part of his mission was to set perfect example in this most important lesson, how to pass life's ultimate test. But now his disciples were asking him to postpone the lesson in dying and stay with him indefinitely in the preaching field. And Prabhupada had agreed, showing that he had the ability to live if he chose. But sooner or later, he would have to return to the lesson on how a person should face end of life. One special feature of Srila Prabhupada's activities is his relating intimately to the human condition while at the same time remaining aloof and transcendental. As a pure devotee, he was not subjected to the laws of karma, which award reactions for pious and sinful deeds. He was not born by the force of karma, nor would he die by force of karma. As stated by Srila Rupa Goswami, one whose body, mind, and words are fully engaged in devotional service to Lord Krishna is a liberated soul, even while living in this world. Jivan Mukta. People often misunderstand the movements of a pure devotee within the material world. Just as one seeing clouds blowing past the moon may think the moon itself is moving, the Shastra therefore warn us never to see Guru as an ordinary man subject to karma. So ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति हैं हमारी तरह, क्योंकि वो कर्म से बंध के इस जगत में नहीं आते हैं, बल्कि कृष्ण की मर्जी से आते हैं. और जब वो जाते भी हैं तो कृष्ण की मर्जी से जाते हैं और इच्छा से जाते हैं. और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से कई बार हम जब चलते हैं देखते हैं कि बादल जो है ऊपर आकाश में चल रहे हैं और हमें लगता है इस तरह से कि जैसे मून चल रहा हो और बादल खड़े हो. सो वी गेट इल्यूजन. सो सिमिलरली शास्त्र कह रहे हैं कि हमें कभी भी जो गुरु या आचार्यों को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए. इसलिए बोलते हैं कि गुरु तत्व और धाम तत्व और शिव तत्व इनको समझना मुश्किल है, क्योंकि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दे कम टुगेदर. सो इसीलिए टू अंडरस्टैंड धाम and Guru is very difficult because material and spiritual mix they made. So we are unable to understand what is happening. But Srila Prabhupada, while always transcendental to this world, showed the conditioned souls how they could come on the stage of liberation by constantly thinking about Krishna and serving him, so that the time of death they could return to Krishna in the eternal spiritual world. So क्या दे रहे हैं कि अगर हमने ये शरीर छोड़ते हुए जाना है तो जाने का तरीका क्या है कि हमें भगवान के बारे में सोचना है.
एक बार एक सीनियर डिवोटी मुझे बता रहे थे कि कैसे एक कोई और अन्य कोई टेम्पल प्रेसिडेंट थे शायद, और वो मृत्युशैया पे थे, और एक बार और जो गुरु महाराज हैं वो उनके पास गए, उनको बुलाया था उन्होंने कि आप आइए, वो शरीर छोड़ने वाले हैं। और गुरु महाराज उन डिवोटी के साथ गए और वो मृत्युशैया पे थे, और उनको बोला महाराज ने कि आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए और आप कृष्ण की लीला के ऊपर आप मनन कीजिए। तो जो डिवोटी हैं, at least he was sincere, so he said, Guru Maharaj, I cannot think, or Maharaj, I cannot think. So Guru Maharaj again and again prompted him, think about Krishna, some leela you like, think about that before leaving. He says, I can't, I am unable to think. Then Guru Maharaj told him, okay, you think about any good times you have with devotees. And after saying that, then he came back. And then on the way he was saying, when devotees don't read and they don't do their sadhana properly, so this is the thing, because in management you may have come up, but spiritually, you are not so advanced, because at the time of death, being forced by your spiritual master or by such a senior Vaishnav, you are unable to think of Krishna. Mind goes here and there. So इसीलिए our whole life, Prabhupada used to say, is a preparation for death. Our test is at the time of death. So we can see also when something happens, scary situation happen, what do we think? We usually think of the near and dear ones. और यार ये काम रह गया, वो काम रह गया. It is difficult. इसीलिए ठीक तरह से अगर हम अपनी साधना करते हैं, वो बहुत जरूरी है. अगर वो साधना ठीक से नहीं करेंगे, तो जैसे ये जिस डिवोटी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा भी ऐसे ही हाल होगा कि भक्त के बैठे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान कृष्ण में नहीं रुकेगा. आगे पढ़ते हैं. And Prabhupada's lessons were always Krishna, were always practical and universal. Srila Prabhupada books, for example, were not mere theory, but were practical and full of realized knowledge. And Prabhupada practiced what he preached. His entire life was exemplary. He had been in family life, and even then, he had vigorously preached by starting his Back to Godhead magazine. In poverty and obscurity, he had struggled to start a spiritual movement. And by the grace of Krishna and his spiritual master, he had become successful. He had always shown by his human-like attempts his willingness to bravely take on austerity and face danger. He had shown exemplary spiritual life for all to try and follow. He had gone alone in old age to a foreign country, and he had chanted Hare Krishna in a park in New York City, attracting the young men and women of America. Therefore, everyone should take his example and try to serve Krishna, despite the immediate impediments. Srila Prabhupada encountered obstacles, yet by his free will and the help of Krishna, he surmounted them. This was his wonderful example. It is said that Lord Chaitanya, 500 years ago, made surrender to Krishna more attainable than Lord Krishna had 5,000 years ago. And now, in the 20th century, Srila Prabhupada had made Krishna consciousness possible for people all over the world. जो कृष्ण आए थे, उन्होंने अपनी जो वृंदावन लीला की, उसमें किसी को एक्सेस नहीं मिली. किसी को नहीं पता था, इंक्लूडिंग his parents in Mathura or the queens in Dwarka, Rukmini or Satyabhama. They all used to wonder कि why जो ये रात को सोते हुए कृष्ण, राधा राधा या किसी गोपा का या नंद महाराज का, यशोदा मैया का नाम क्यों लेते हैं. Even those queens had no access to ब्रज लीला. तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो जो 5,000 साल पहले द्वापर में जो भगवान ने लीलाएं की, जो ब्रज लीला थी, सो लाइक ए सीक्रेट दे रिमेन. बट जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने जो तत्व है राधा कृष्ण का, वो बताया विश्व को कि इनका राधा कृष्ण का तत्व क्या है. उससे पहले इवन जो वैष्णव है, वो कृष्ण को, अकेले कृष्ण की उपासना करते थे, नॉट एज राधा कृष्णा बट ओनली एज कृष्णा, लाइक दिस, या नारायण की. और जो कृष्ण की भी करते थे, वो अकेले कृष्ण की करते थे. तो क्योंकि जो राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं, सबके समझ से बाहर थी कि ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भागवतम में क्या लिखा है. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको रिवील किया. और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके आप
5000 साल पहले कृष्ण ने लीलाएं की, फिर 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिवील किया, और उसके बाद अब 20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद ने वो जो कृष्ण भक्ति है, और वो भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति, वो पूरे विश्व में उसका बीज बोया. As part of his instruction and example, Srila Prabhupada knew he would have to show people just how to die. He had escaped death at a number of times by Krishna's grace, by the prayers of his disciples, and by his own pure and powerful will to propagate his movement. But from the signs given to him by Lord Krishna in 1977, Srila Prabhupada began decisively and conclusively ending his mission in the material world. And among his final duties was his giving complete guidelines on how to die. He was perfectly showing how to do that, which everyone has to do, but which is most difficult to do successfully, how to die. Okay, so now who raised the hand? They can read. Yes. Okay. First is Ronnie Prabhu. Yes, Ronnie Prabhu. Go ahead. Hare Krishna Prabhu. Right. But a loving conflict was there. Prabhupada loved his disciples. He also knew they were not yet fully mature. His movement already had great potency and stature in the world, yet it had many enemies. He was inclined to always protect his devotees, his movement, and all living entities, even the animals. So when his most intimate and faithful disciples pleaded that they could not go on without him, he had turned from showing how to die, agreeing to stay with them and preach. But at that point, they would ever be willing to let him go? Would they ever be willing to let him go? At what time could he say that the world of Maya and the enemies of Krishna were all gone? At what point would his disciples become fully mature? In following his decision to stay, Srila Prabhupada turned himself over to his disciples, allowing them to care for him completely. Those who took part recalled that never before had Srila Prabhupada allowed such intimate dealings between himself and his disciples. The only thing comparable was in New York in 1966, when he had been very intimate in dealing with the first persons to join him, persons who had known nothing of the etiquette of approaching a spiritual master. But those who were present now and who had also been present then said that these days were even more intimate. At one point, Kirtananda firmly insisted that Srila Prabhupada drink a full cup of juice. Even when he said he had had enough, Kirtananda felt awkward, insisting, I am not like Mother Yashoda that I can do this, he said. I keep remembering that you are my spiritual master. But Srila Prabhupada allowed himself to be ordered by Kirtananda. Similarly, Bhavananda, Tamal Krishna Bhakti Charu, Upendra, and other servants coaxed Srila Prabhupada to follow certain diets and cared for his body constantly. The other devotees were reminded of the story of Ishwar Puri, who gave intimate bodily service to his spiritual master Madhvendra Puri when Madhvendra was in the last stages of his life and apparently invalid. According to the Chaitanya Charitamrita, it was by this menial bodily service that Ishwar Puri proved his love for his spiritual master and was allowed to become the spiritual master of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada had deferred the lessons in dying in favor of giving his disciples an unparalleled opportunity to serve him in pure and simple love. And he allowed this not only for a few, but for whoever came to Vrindavan. Many came, and all were allowed to enter Srila Prabhupada's room, massage his body, and sit with him as long as they liked, day and night, chanting the holy name for his pleasure. Srila Prabhupada also his recommenced his translating, and this was done openly. Whereas previously he had always worked in solitude, he now encouraged all the devotees to come as he lay in bed dictating his Bhakti Vedanta purports. He was giving himself completely and declaring it also, telling the devotees present, never leave me, and I cannot live without your company. They had asked him to stay, and he had agreed, consigning himself completely to their care. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Yes. Next, Nidhi Mataji. God, Mataji.
Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Prabhupada also continued speaking as he had in recent months about being unafraid of death and being fixed in transcendental knowledge. When receiving a presentation of some of his books recently printed in Portuguese by Hridyanand Goswami, Prabhupada encouraged him and said, "This is life. The material world is just bones. The bones are not our real life. Our real concern is the living force. The bones may remain or go, it doesn't matter. The real life is sustaining the bones. There is even a history that there was a rishi who had only bones. So there is a science by which you can sustain life by only bones. Hiranyakashipu did it. You are also doing it, Srila Prabhupada, Tamal Krishna said. So take care of the bones as long as possible, said Prabhupada. But the real life is here. Always remember that. The material world means we are simply all protecting bones and flesh together, but they have no knowledge of what they are. And when Atrayi Rishi visited Srila Prabhupada and asked that he visit Tehran, Prabhupada said that he was ready to go, but now you have to take a bundle of bones. These were, of course, the same themes that Prabhupada had always taught, the same themes that were in his books, but the lessons were more pungent and striking when Prabhupada applied them to his own situation. More than one devotee compared Prabhupada to Bhishma Dev, who gave important instructions in his last days. As Bhishma felt no pain and delivered learned and loving discourses even from his bed of arrows, and as Bhishma determined by his own will the time of his departure from the world, so Srila Prabhupada spent his last days oblivious to his physical condition, defying death, and instructing his spiritually innocent sons. But Prabhupada's sons could no longer stand by and simply hear the philosophical lessons. Prabhupada had accepted their affection when they had cried for him to stay with him, and now they wanted to express that affection in the only world they understood, a world with Srila Prabhupada living and talking with them, laughing and reprimanding them as he liked. They wanted him to eat and drink and become physically strong again. But again, Srila Prabhupada seemed to change, and he began refusing food and drink. He had postponed his passing away to exchange loving with his disciples, and yet in the same time, by refusing to eat or drink, he was showing his preference for passing away. He admitted when pressed that it was an impossible course of action to live without food or drink, nor did he expect or want miracle. If he was to get better, it would be by taking nourishment. But for reasons of his own, he would not eat. He said recovery was material and he did not want it. He kept closely in tune with the will of Krishna, allowing the holy name to sustain him. The doctors who came were often puzzled, but those who were Vaishnavas understood and respected his prerogative. Prabhupada's servants made anxiety filled attempts to induce Prabhupada to take regular treatment, but Prabhupada preferred to take only Kirtan and Bhagavatam, while at the same time sustaining a willingness to live. He empathized with his disciples' anxiety and patiently explained the puzzling situation they were in. He wanted their care and he allowed them to try and treat him, knowing that it was bringing them more and more into a surrender of love. But gradually it became more clear that Krishna's will was indicating Prabhupada's departure. Srila Prabhupada Bhavanand coaxed, always working on the assumption that Prabhupada could stay if he wanted. Your presence on this planet is the only thing that is keeping the onslaught of the Kali Yuga from really taking effect. We have no idea even what will happen if you leave. It is not in my hands, said Prabhupada, with perfect clarity of consciousness. Krishna Balram. Thank you, Srila Mataji. Prabhupada. Thank you. Thank you, Mataji. 3 4 devotees are there. So he's, see, whatever he taught, he's going through the same, but now
philosophy is one thing, and to go through the real life is another thing. So now Prabhupada is going through easily, but जो उनके disciples हैं और जो भक्त हैं, for them it is very painful. But Prabhupada's consciousness remained very clear and clean even at that time. और अभी भी जो कह रहे हैं कि we have no idea what will happen if you leave. So Prabhupada is saying it's not in my hand, it's in the hand of Krishna Balaram. Like this. Okay, so next we will do quickly. Yes, Shivani Mataji, go ahead. Hare Krishna. Hare Krishna. Shivani Mataji is there? Okay. So, yes, Rameshwaram Prabhu, go ahead. Hare Krishna. Srila Prabhupada always spoke clearly, logically, and with complete devotion to Krishna. Up until the last, he dealt with practical matters, forming a Bhaktivedanta Swami Charity Trust for reconstructing ancient temples in Bengal and arranging final details regarding ISKCON properties and monies. Through all the dealings, he stayed always alert and he absorbed himself in Kirtan and Bhagavatam. But it became obvious to his disciples that despite his promise, he was again moving inevitably towards giving the final lesson. He was teaching that love was beyond death, and that a disciple's love could call the spiritual master back to the world to stay, and that a pure devotee has the ability to stay in the world beyond his allotted time. Meanwhile, however, he was progressing steadily to the final point. The devotees didn't feel angry with him or cheated that he was doing so. He had told them that he had a free will given by Krishna, and they also, by their free will, had asked him to stay, and he had agreed. But they knew he was not obliged. If, despite their prayer, Lord Krishna was telling Srila Prabhupada that he should come back home to Godhead, what could they do but accept? If Srila Prabhupada was accepting them, then they would accept also. Nothing, however, could change the fact of their surrendered love. It had now become a solid pact that could not be vanquished by any material changes. They had passed the test of eternal loving service, and that could not be taken away by death. Up until the end, there were interludes of sweetness as well as displays of Prabhupada's indomitable mood of fighting for Krishna. One day, Prabhupada's sister Pishima arrived unexpectedly, and Prabhupada asked her to cook khichdi. At that time, Kirtanand was trying to put Prabhupada on the road to recovery by gradually increasing his liquids, and Kirtananda and other devotees opposed the idea of his suddenly eating solid foods. But Srila Prabhupada insisted. It doesn't matter whether what she cooks does good to me or bad, said Srila Prabhupada. She is a Vaishnavi. It will be good for me. He then began speaking in an extremely humble way. Probably I became a little puffed up because of my opulence and success, he said. Now God has shattered that pride. If you don't have your body, what is there to be puffed up about? Bhakti Charu Swami protested, Srila Prabhupada, whatever you have done for Krishna. That may be, but in this world, unknowingly, you commit offenses. When Pishima heard this, she exclaimed, No, he never committed any offense. You cannot ever commit offenses, said Bhakti Charu. You are God's very dear one. How can you commit offenses? Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So it's a painful reading as we go through, and जब भक्त पढ़ते हैं, so it is not something which we tend to take it as a lesson. Rather, it comes as a
as a arrow is piercing our heart. So we can read it after the class. We can read it. So I just want, today so many of you have come. Please share, that our how Srila Prabhupada is has a role to play or had a role to play in our life, that I wanted to come and share कि हमारी जो spiritual life है, कि do we feel any presence of Prabhupada in our spiritual life? It could be a small incident, it could be, anything which we feel or we felt some connection with Prabhupada. So अगर आप लोग share करेंगे, so it would be nice glorification of Prabhupada, because Tirubhav, this is a good opportunity to glorify those spiritual personalities. So who will share first? Meenakshi Mataji, you can begin. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. I can't open there's some problem in my system, so I can't switch it on my video. So, okay. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishprashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshika. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. All glories to Srila Prabhupada. So I just was thinking today, like it's a disappearance day, like Prabhuji was saying, it's always a piercing to the heart. How to understand this disappearance. Like Prabhupada wrote in one of his Back to God and Maxime that as the Lord Krishna appears and disappears, are all spiritual, transcendental. They are not ordinary things. Similarly, Lord Krishna's devotee, his representative who is sent to this material world for preaching the glories of a Lord Krishna, their appearance and disappearance is also like Krishna. Therefore, according to the Vaishnava principle, the appearance and disappearance of Vaishnava is considered all auspicious. So just thinking about that one, like this world is actually full of dualities. For us, these two words, appearance and disappearance, seems to be a different, like ana jana, hai na? It's different. But like in spiritual world, there is no duality. Everything is same. Like that's what the Prabhupada is explaining in this paragraph, that appearance and disappearance is the same, is all auspicious. Like for us, when we think about our loved ones going away, we consider that moment as an inauspicious. But in spiritual things, nothing is inauspicious. Everything is auspicious. So I just contemplated how to understand this disappearance. So then again, just one of the very common quote which has been generally on the disappearance day, the people used to share is that of Bhakti Vinod Thakur ji wrote about a Vaishnava, pure Vaishnava, that he reason ill who tells the Vaishnava die when though art of living is still in sound. The Vaishnava die to live, and living try to spread the holy name around. So this, when I start reading about this quote again and again, I realize the main essence of this one is that yes, Srila Prabhupada is still with us in a form of sound. Right? Art of living still in sound. I remember मैंने पास्ट टाइम पढ़ा था जिसमें प्रभुपाद ने बोला अपने डिवोटीज को बोला कि टेप रिकॉर्डर को ऑन करने के लिए, जो एक दिन पहले की प्रभुपाद की लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी. तो प्रभुपाद स्टार्ट हियरिंग दैट लेक्चर और फिर प्रभुपाद ने बंद करवाया और फिर प्रभुपाद ने बोला, सी इट्स द सेम, आई एम स्पीकिंग एंड द टेप रिकॉर्डर स्पीकिंग, इज द सेम. Because for in a spiritual world, this transcendental sound is the same. Whether it's present, it's still present. Prabhupada is present in form of his books, his sound, his everything actually. His temple. That temple is also a representative of Srila Prabhupada. So this really touches my heart that yes, कि हम जब जैसे हम लोग मैं अभी भक्ति में आई तो Prabhupada as a physical presence is not there on the world, but still with the time I able to develop some
attachment for Srila Prabhupada. Why? Because of these books, because of the Prabhupada lectures, because of the Prabhupada sound which is present and which is help us to get the understanding of spiritual thing. क्योंकि हम हर चीज actually material perspective से सोचते हैं, but ऐसा नहीं है. But because of this gives us little bit realization what actually spirituality is. And we are so lucky that हम लोग इस टाइम पर born हुए हैं जहाँ पर हम प्रभुपाद की वीडियोस देख सकते हैं, हम प्रभुपाद के लेक्चर्स इजीली सुन सकते हैं, just टाइप किया और whatever you want to hear you can easily Google it and hear it. So ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. I was thinking कि अगर मैं उस टाइम पर कभी born होती या प्रभुपाद उस टाइम पे आए होते जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी या कुछ भी नहीं होता था. So it's so difficult for us. अभी इतना डिफिकल्ट है इन सब चीजों के होने के बावजूद कनेक्ट करना, तो what it would be more difficult अगर ये सब चीजें नहीं होती. जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, everything is there. So that really helped us, for me, to connect Srila Prabhupada more and more. And my personal realization is that more hearing, more reading help us to appreciate what Prabhupada has gave us and also give us the more deeper attachment for the Srila Prabhupada. तो जितना ज्यादा हम किसी चीज को appreciate करते हैं, उतना ही हम उसके साथ उस चीज के साथ हम अपना attachment develop करते हैं basically. So that's what I really understand. क्योंकि and also I was thinking about what Prabhupada has not given us. Like अभी हम लोग आ रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रसादम के लिए कि अमित प्रभु offered us the गुलाब जामुन. Then we said कि लोगों को लगता है कि जो spirituality है बहुत austere है, but how much we are enjoying through a prasadam and a lot of other things through a kirtan also, that people will not able to understand that thing that what Prabhupada has given us. Prasadam and temple, deities worship, everything Prabhupada gave us just the first class and so beautiful. So it's so easy for us, अगर हम बहुत ज़्यादा disturb भी हैं, it's for easy so us to meditate on deities. कितने सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है deities का. अभी recently हम लोग द्वारका गए थे, तो वहां पर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग बलराम जी का वो श्रृंगार उसको देख सके. So I was looking at and seeing how they are doing shringar, how they're putting a eyeliner, earring to the Lord. Then I realizes that why I able to appreciate that one, because Prabhupada give us the understanding. अगर प्रभुपाद मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं देते तो मैं उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाती. बाकी सब लोगों की तरह ये आती, प्रणाम करती और चली जाती. But I able to stand over there, appreciate. नहीं मुझे ये देखना है, नहीं मुझे इसको जानना है. So it's all because of the Srila Prabhupada basically. So that's what I want to share today, and really want to thank Srila Prabhupada for everything. Even I don't even think about it. That's for that also I want to thank Srila Prabhupada. And I just want to pray to Srila Prabhupada that I'll keep on sincerely studying his books and keep on hearing his lectures sincerely, so that I can develop my more attachment with Srila Prabhupada. Thank you so much for giving me opportunity to just glorify Prabhupada a little bit. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, once Bhakti Prem Maharaj told me when मैं शुरू में क्लास पहली बार शायद क्लास देनी थी और मैं उज्जैन में था और मैंने महाराज से बोला कि मेरे हाथ पैर फूले हैं, टेम्पल ने बोला है क्लास देनी है, मैं कैसे क्लास दूंगा. सो महाराज ने बोला कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, बट ही बेसिकली सेड कि मतलब इतना स्ट्रिक्टली तो नहीं बोला, पर तब भी काफी उन्होंने बोला कि लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर कि एक भक्त के ऊपर जो अपने गुरु महाराज को और आचार्य को जो ग्लोरीफाई न कर पाए. उन्होंने बोला भागवतों की क्लास में क्या होता है, या प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन होती है या कृष्णा की होती है. हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो भक्ति क्या जो इम्प्रॉम्प्टू गुरु की और आचार्य की जैसे कोई बोले उसी वक्त हमारे जीवा से ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जानी चाहिए. सो वो मुझे आज भी याद है, वो छत के ऊपर बैठ कर बोला, ऐसा झटका दिया. फिर मुझे लगा हाँ ठीक कह रहे हैं, तो मेरे में ही कमी है, वहाँ टेंशन का कोई ऐसा नहीं है. और जैसे माता जी ने बोला
कि कितनी चीजें दी, और हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति का प्रोसेस कितना आसान भी बना दिया। आप देखिए प्रभुपाद के गुरु महाराज के टाइम के ऊपर वो 64 माला करते थे। आप सोचिए कि अगर आप गौड़िया मठ के किसी भक्त के आते और आपको बोलते हैं कि अगर आप सत्या भक्त करना चाहते हैं तो आपको 64 माला करनी पड़ेगी। तो आप देखिए कितने लोग आते। उन्होंने माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दी, जिससे पहले कोई नहीं देता था। इट वाज रेयर एंड रेयर। सो उन्होंने ओपनली ही गेव माता जी ब्राह्मण दीक्षा। एक तरफ उन्होंने फेमिनिज्म को कट किया और दूसरी तरफ उन्होंने ही पंडिता समदर्शिना देखते हुए उन्होंने माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे दी। रादर माता जी वर अलाउड टू स्टे इन द टेम्पल आल्सो, अनहर्ड ऑफ इन एनी मठ outside India at least. The Mataji are doing Aarti also, Pujari work. So like this. So he was a revolutionary acharya, जिन्होंने इसी रिवोल्यूशन की वजह से ही कृष्ण भक्ति इतनी फैली है। नहीं तो प्रभुपाद बोलते थे कि वहाँ नवदीप परिक्रमा होती है, वहाँ जो बूढ़ी विधवाएं हैं वही आती हैं। सो अब आप नवदीप मंडल परिक्रमा देखिए कि all youth is there to do this. So all this has happened by Prabhupada mercy. Okay, so shortly we have few minutes, so others also can share. Yes, Nidhi Mataji, please share. Hi Krishna Prabhuji. Prabhuji, I would like to say कि मेरी भक्ति जो स्टार्ट हुई, जो मुझे असली मायने समझ में आए भक्ति के, वो इस्कॉन जाने के बाद ही समझ आए। जो एक कनेक्शन बना भगवान के साथ, वो उससे पहले नहीं था। मंदिर जाते थे, हाथ जोड़ते थे, सुना था भगवान है, लेकिन एक हार्ट टू हार्ट कुछ कनेक्शन नहीं होता था। वो कनेक्शन सिर्फ इस्कॉन जाने के बाद ही कुछ हुआ। तो अगर प्रभुपाद नहीं होते, इस्कॉन नहीं बनते, तो पता नहीं मतलब कैसी लाइफ हमारी होती। सिंफुल तो अभी भी है, काफी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सिन करते हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक फेथ रहता है कि भगवान को सरेंडर किया है तो सूनर और लेटर ही विल टेक केयर। तो डिवोटीज का संग, personally when I think that I mean for all these years, if I've been able to sustain, I think it's only because of association of devotees. All glories to Srila Prabhupada. Books, I would say that I'm still lacking in this area. I promise myself कि नहीं पढ़ूंगी, but ठीक है। बट एक जब भी आपको सुनती हूँ, डिवोटीज को सुनती हूँ, तो एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं, अपनी साधना को ठीक करना है। और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड एक अभी हुआ, विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल। बुक्स की पोटेंसी हम अभी तक सुनते थे खाली कि मतलब कितनी पोटेंसी है। शौर्य का एक फ्रेंड है, एंड ही इज आल्सो लाइक his age 15 years, and उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए थे, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ यात्रा पे गए थे, और वहां पे उनको किसी ने भगवत गीता दी। तो वो भगवत गीता को घर में लेके आए, और वो भगवत गीता जो है शौर्य के फ्रेंड के हाथ में लगी। एंड आई कांट इमेजिन, वो 15-year-old चाइल्ड स्टार्टेड रीडिंग इट, और वो उसको पढ़ना उसने शुरू किया, और वो उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा दैट ही इज रीडिंग डे एंड नाइट, and he's carrying that book to the school, and he's telling all his friends ki it is all material. I mean, I get goosebumps when I'm telling you this. And Shaurya ki friends ki kal koi common party thi, and this particular boy comes in the party, and like they were all celebrating, and suddenly he said, this is all bullshit, let's hear some bhajan. And he put on the bhajans, and Shaurya is like, she said, "Ghar pe bhi aap yahi kar rahe ho?" When I go to him, he's also doing the same thing. What is this? So, I mean, this is amazing that I
told Shaurya ki Shaurya मेरे को please, and he started giving lectures. He's telling his friends कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, and I'm like Shaurya please मेरे को उससे मिलवा, I want to meet him and I want to take him to ISKCON. So this is like so beautiful. I mean, yeah. So I mean, I feel so small in front of that boy कि उसको एक बार वो बुक हाथ में लगी and he is like so ahead of me and what am I doing? So I keep thinking about him and I pick up my Bhagavad Gita. I said नहीं आज तो मैं पढ़ूंगी ये. So this is like really amazing. I don't think I have ever like in all these years कभी पहले मैंने किसी से सुना हो कि आपने भगवत गीता उठाई और आप इस तरीके से पढ़ने लगे. लोगों के घर में होती हैं बुक्स, वो पढ़ते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन श्रीला प्रभुपाद की बुक से आती है, आई डोंट थिंक कि वो कहीं और से. सो इट इज लाइक आवर वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट श्रीला प्रभुपाद ने इतना कुछ किया, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज आवर ड्यूटी कि हम भी फॉलो करें उनकी इंस्ट्रक्शंस को और सीरियसली अपनी साधना को लें. That's all, Prabhuji, from my side. अमेजिंग, थैंक यू माता जी. हाँ देखिए 15 साल के बच्चे टीनेजर में, और दिस द पावर ऑफ प्रभुपाद भक्ति वेदांत पर्पट्स. और यस लाइक यू सेड कि प्रभुपाद ना होते तो क्या होते. और जयप्रताप महाराज ने वो भजन भी लिखा है कि यदि प्रभुपाद ना होते तब ताबे की हो तो ए जीवन बहिता कैसे. निताई गौरे अपार कोरोना के दीता सकल देश. कि ये जो कि अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होते, और ये जो हमारा जीवन है ये कैसे चलता. वी कैन रिलेट टू दिस कि बिफोर ज्वाइनिंग ISKCON व्हाट वाज आवर लाइफ अबाउट. और जो निताई और गौरंग महाप्रभु, कि इनकी जो करुणा है, कि वो इतने सारे देशों को इन्होंने दी तो कैसे मिलती. सो दैट इज ट्रू माता जी. And that is also the power of institution. Because of that, we have book publishing, book distribution. So अब देखिए एक कोई किस जन्म में उस पायस बच्चे की कहाँ भक्ति पिछले जन्म में कहाँ शुरू होगी, और भगवत गीता हाथ में आते ही लाइक ए फायर एकदम वो शुरू हो गई. So that's why to read Prabhupada books and to distribute his books is so important. Thank you, Mataji. Yes, Bhuvan Mohini Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. यस प्रभु जी. तो आज आपने कचौड़ी बनाई कि नहीं बताई, पहले तो ये बताइए. यस प्रभु जी, बनाई. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गाइडिंग मी. यस माता जी. यस प्रभु जी. एक मैं शेयर करना चाह रही थी. एक बार गुरु महाराज सपने में आए थे जब गुरु महाराज वपु रूप में थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे दाल कचौरी खानी है. पर मैंने उस समय बनाई नहीं थी, कभी ट्राई नहीं की थी, मतलब कि कैसे बनाना है कभी ट्राई नहीं किया था, उनको कभी खिलाया भी नहीं. फिर अभी 2-3 बार से अच्छा बनने लग गया. तो आपने जब कल कहा तो उनका हाँ ये तो फटाफट बना लेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू महाराज. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है, विग्रह है, 300 साल पुराने हैं करीब. तो मेरे मामा मम्मी उनकी पूजा करते थे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे. बट मेरा कोई इंटरेस्ट कभी ऐसे था नहीं, पर और ये भी नहीं मालूम था भक्ति क्या है, कैसे करना है, ना कभी जानने की इच्छा थी. पर प्रभुपाद ने क्या किया कि प्रभुपाद ने ना भक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया. मतलब कि अगर जैसे हम सुबह उठना है, मंगला आरती, यदि मंगला आरती करना है, फिर उसके बाद आपको जो भी बनाना है उसका भोग लगाना है, तो मतलब आप कैसे ना कैसे धोखे से भी आप भगवान से जुड़े हो. तो मतलब प्रभुपाद ने इस तरह से पूरा एक प्रोसेस दिया है कि दिन भर में आप कई बार भगवान को याद कर सकते हो, मतलब जाने अनजाने कैसे भी आप याद कर सकते हो. तो और जो माला करने का, पहले ऐसे कभी नहीं था. पहले हमेशा यही सोचते थे कि ये तो बूढ़े लोगों का काम है, और एक जगह बैठ के माला करके क्या मिलेगा. मतलब जो ये था कि मानव सेवा माधव सेवा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी तो जो प्रभुपाद ने क्लियर की और उनकी बुक से क्लियर हुई.
और पहले मैं ये सोचती थी कि बुक पढ़ के कोई चेंज कैसे हो सकता है, मतलब नेचर किसी का कैसे बदल सकते हैं, बेसिक नेचर हमेशा वही रहेगा या कुछ। और एक जब मैं भोपाल में थी उस समय इनिशिएशन नहीं हुआ था, तो एक और माता जी थे, तो हम दोनों ने सोचा कि चलो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और बस ऐसे मजाक मजाक में कि सभी करते हैं हम भी करेंगे। तो हमने अपनी पूरी कॉलोनी में एक एक घर जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो प्रभु जी अभी जब रथ यात्रा में भोपाल गए थे, तो मतलब ये बात हो गई करीब 7-8 साल पुरानी। और अभी जब हम रथ यात्रा में भोपाल गए थे, तो वो एक लड़का मिला, कहते माता जी आपने हमें वो बुक दी थी, वो पढ़ करके हमको अच्छा लगा, और अब मैं रोज सैटरडे संडे मतलब जाता हूँ, और पूना में मैं आजकल पूना में पढ़ रहा हूँ, तो मैं राधे श्याम प्रभु के अंडर में हूँ। तो मतलब प्रभुपाद की बुक्स में इतना पावर है। पहले पहले जब ऐसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, जाना नहीं था पावर को, ना खुद ने पढ़ना चालू किया था, बट उसमें इतना पावर है, तो ये अच्छा लगता है। और दो चीजें शेयर करना चाहूंगी जो फेसबुक में एक पढ़ा था, कि एक एस्ट्रोलॉजर, वो पेपर में आया था ऐसे कि एक एस्ट्रोलॉजर ने जब प्रभुपाद की कुंडली देखी, तो उन्होंने ये बोला कि ना इसमें तो मतलब ये तो इन पर तो पुण्य पाप पुण्य का कोई असर ही नहीं है, ये कुंडली में मतलब किसी की कुंडली ऐसी मैंने देखी नहीं जिसमें कि सारे ग्रह इतने अलाइंड हो, हर ग्रह अपनी सही स्थिति पर हो, ऐसी किसी की कुंडली मैंने देखी नहीं। ये तो डायरेक्ट भगवान के यहाँ से आए हैं, ये यहाँ के व्यक्ति है ही नहीं। तो वो सुन के ना बहुत ऐसे प्राउड फील हुआ कि हम प्रभुपाद के बच्चे हैं। और एक ये क्वेश्चन मतलब कि जो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का इतना बोलते हैं, बदले में उनका शोषण ही करते हैं, पर असली एग्जाम्पल प्रभुपाद ने सेट किया कि जब उन्होंने बोला कि क्या मतलब माता जी संन्यास ले सकती है, क्या वो दीक्षा दे सकती है, तो प्रभुपाद का आंसर था कि क्यों नहीं दे सकती है। जानवा देवी का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई इतना प्योर है तो वो दे सकते हैं। तो प्रभुपाद बहुत ऐसे खुले विचारों के थे, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ऐसे कई लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में तो महिलाओं को बहुत ऐसे दबा दिया गया है या ऐसे है, तो एक्चुअली जिसने पढ़े हैं और आत्मसात किए हैं शास्त्र, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है। मतलब वो अंतर नहीं करते महिला पुरुष में, वो एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट है। जो हम देख रहे हैं आजकल तो शोषण है। तो ये अच्छा लगता है कि हम प्रभुपाद के बच्चे हैं, ये सोच करके बहुत ऐसे प्राउड फील होता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं रोज प्रभुपाद बुक रीडिंग करूं। हरी थैंक यू। बोल। यस, वंडरफुल माता जी, थैंक यू, है ना। और एक और देखिए कि लाइव एक हम देखा कि किस तरह से पहले वो निधि माता जी ने बताया, और अब भुवन मोहिनी माता जी ने बताया किस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका कोई खुद भी नहीं पढ़ी थी, पर तब भी उसका देने की पोटेंसी देखिए। तो इसीलिए ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ये इतना ज़रूरी है। और स्पेशली प्रभुपाद बोलते थे कि तुम्हारी 2 मिनट की प्रीचिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा, आप किसी को बुक दो, वो पढ़ेगा तो उसका कुछ 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 दिल में होगा। तो हम लोग जो है लेक्चरों पे और इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट जो पोटेंसी है वो प्रभुपाद के वर्ड्स में है। और गुरु महाराज बोलते थे कि जितने भी लोग आए हैं इस्कॉन में, सब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के आए हैं, इसमें क्या है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं, सब लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के ही यूजुअली आते हैं। और सो वी विल, बिकॉज थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, और यू वांट टू शेयर समथिंग क्विकली, who Ronnie Prabhu, you raised hand? Take it from Prabhuji. Yes, Prabhu. Salam. Yes, Prabhu. I just wanted to quickly share a few things after hearing from you. Like Prabhupada is a very transcendental personality. और तो कहीं किसी का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ही एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं that we would simply be rotting in a life that had it not been Prabhupada gone to US and done all that thing, set up ISKCON and preached to all the devotees and और एक और चीज है जैसे कि हम इतना कनेक्शन फील करते हैं श्रील प्रभुपाद से, और ऐसे कितने पर्सनैलिटीज हैं जिनसे हम नहीं मिले, जिनके साथ हम सेम कनेक्शन फील करते हैं। मतलब I cannot even imagine any other personality that whom I have not met. I have not even met even a single time
and or not even in my lifetime. ऐसा नहीं है कि I have not just met, मिला तो मैं नरेंद्र मोदी से भी नहीं हूँ, but he is still there in my in my lifetime, right? But he is not even here in the lifetime, gone so much time back, and still there is so much connection. So then how is this? That can only be explained in a transcendental manner only. That how Srila Prabhupada is such a transcendental personality who can transform even stone hearts like me. And basically, like I was looking for few in knowledge or some answers. कोई ज्ञान के पीछे से मैं था और मैं आया, and it was only because of Prabhupada that Prabhupada could give that thing in his purports, in his books, that he could preach to all over the world. And I got attracted, and then I was able to sustain, and I still pray that I still able to sustain in this Krishna consciousness. One just small pastime I just wanted to share, that how we can connect dots looking मतलब इतना आगे आने के बाद how we can connect few dots. Like I remember that जब जब बिफोर कमिंग टू इस्कॉन, लाइक जो हमारे घर पे मंदिर होता था वही वैसे ही सब कुछ देवी देवता एंड ऑल द ऑल्टर एंड एवरीथिंग. And then my mother, she shared one thing. I was really very taken aback when she shared that, because जब वो भी आए उन्होंने भी प्रभुपाद को पहली बार देखा, और मतलब देखा तो क्या, फिर प्रभुपाद उसे पहली बार समझा कि ये प्रभुपाद हैं, अच्छा ये इन्होंने भगवद गीता दी है और ऐसे ये सारा कुछ है, एंड इस्कॉन जैसी भी कोई संस्था है. एंड और प्रभुपाद का जब फेस देखा या फिर प्रभुपाद की पर्सनैलिटी को देखा, सो देन शी शेयर्ड कि हमारे ऑल्टर में पिछले 30-40 साल से देयर वाज अ प्रभुपाद पिक्चर. एंड आई वाज, एंड व्हेन शी शेयर्ड दैट, एंड शी शेयर्ड विद एन एग्जांपल दैट कि जो मेरे ग्रैंडमदर हैं, शी हैड केप्ट दैट पिक्चर इन आवर ऑल्टर, एंड she would think, my mother would think कि this personality looks like Sardar Patel, which Prabhupada does actually, little bit, some resemblance as Sardar Patel. But then she shared कि उनकी फोटो हमारे ऑल्टर में है for so many years, and nobody knows who that personality is, but that personality is there. And now I can connect that thing, that oh, Prabhupada was there in the altar for so long, and all everybody thought Sardar Patel की picture क्यों है हमारे मंदिर में. And then I also remember some vague memories that yes, I remember a personality who has that resemblance of Prabhupada. It was a little torn out picture, of course, and then हमने उसका विसर्जन वगैरह कर दिया होगा, but then everything set it up. Then now I can connect that thing, that how Prabhupada had kept his mercy on all of us, and it was meant to be in that sense. And other things also we can say that how Prabhupada made everything accessible. जैसे कि we face so many difficult situations in our life, and but we try to approach senior devotees, we try to approach we approach senior devotees, we approach Maharaj, we approach other Vaishnavas, and what they are giving their realizations based out of what? They are giving realizations based out of Prabhupada's purport, Prabhupada teaching and everything. So directly, either we are directly approaching Prabhupada's purport or indirectly approaching those devotees who are giving us the solutions through Prabhupada's teachings and Prabhupada's purport. So he made, like he has solved all those things of all the problems that we are going to face or we are facing in our life. So in that sense, and also of course we can share many other examples that how we have solved that thing. Yes, Rohit. So I wanted to share more, but yeah, I think this time is maybe we can do maybe tomorrow we can sit again and do it, because it's already a little late. yes. You want to share something in 1 or 2 minutes, Ramesha Gurang Prabhu, or we continue tomorrow? Hare Krishna, Prabhuji. We'll continue tomorrow, Prabhuji. 1 or 2 minutes, I think. Yes, so we'll continue. Very nice, Prabhuji, to get into this. हम हर रोज लीलामृत पढ़ रहे हैं, so it is good. ऐसा नहीं है कि आज तिरुभाव खत्म हो गया and the connection is cut, so we can do it tomorrow. So I just want to share with you कि just see, this is one of the last purports Prabhupada translated
It's the 10:13:54. और देखिए इसके एंड में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं. This is the last. He's doing this ये बेड पे मृत्युशैया पे बैठ के प्रभुपाद on death bed. He's doing these purports जितने भी हैं ये. और इसमें देखिए क्या लिखते हैं ये. This is one of the last purports Prabhupada did. We should discuss Srimad Bhagavatam daily as much as possible. Then everything will be clarified. For Bhagavatam is the essence of all Vedic literature. Nigama Kalpatru Galitam Palam. It was written by Vyasdev Mahamuni Krite when he was self-realized. Thus, the more we read Srimad Bhagavatam, the more its knowledge becomes clear. Each and every verse is transcendental. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है भक्तों की लाइफ में कि हम लोग भागवतम पढ़ें. नित्यम भागवत सेवया. This Prabhupada's purpose at his deathbed is writing, we should discuss Bhagavatam. He's not saying read Bhagavatam. He's saying we should discuss Bhagavatam daily as much as possible. Then everything will be removed. And the more we read Bhagavatam, the more the knowledge becomes clear. Each and every verse is transcendental. And this is the last one. ये जिसे माता जी ने बोला और भक्ति विनोद ठाकुर को कोट किया था. सो ये प्रभुपाद अपनी डेडिकेशन में अपने गुरु महाराज को जो भागवतम लिखी उन्होंने यही लिखा, he lives forever by his divine instructions and the follower lives with him. So we have this opportunity to live forever by Prabhupada's instructions and to live with him forever. ये हमें these lines Prabhupada wrote in the first canto of Bhagavatam on his dedication. He wrote, he lives forever by his divine instructions and the follower lives with him. What he meant to say, that I am always with my Guru Maharaj. So we can also be always with Srila Prabhupada if we follow his instructions and keep connection through Vani. And there are many acharyas. They have written many great, tikas. There's so many we hear sometime for some particular thing. But I can tell you, for a little bit of what my little experience, these purports are transcendental purports. They are beyond anything. Somebody may have written this, somebody may have written that, but there is nothing like Bhaktivedanta purports. और हम जितना पढ़ेंगे हमारे लेवल के ऊपर, see like Baldev Vidya Vibhushan has written tika, Vishwanath Chakravarti Thakur has written tika. We can read those tikas, but mostly we will not get access because they are written for a Madhyamadikari. They are not meant for Kanishta. Usually ऐसे हम नहीं बोलते हैं, but truth is this, they are not meant for Kanishta. Vishwanath Chakravarti Thakur's purports are for Madhyam. He considers bhakti starts from beyond Madhyam. Then he calls somebody Bhakt, otherwise not a Bhakt. So the tika is meant for somebody who's practicing, who's a Madhyamadikari or practicing Anya Bhilashta Shunyam. For that level, the tika is written. So which means 99.99999% of the people cannot touch it. It is beyond them. We will just make offenses or do some Arop Siddha Bhakti by reading it. It will not help us. But the unique thing in Prabhupada's purpose is that as a Kanishta, as a Madhyam, as a Uttam, we can get the juice out of them based upon our own adhikar. They can relate to us at a neophyte level, at a middle level, and at a superior level, like this. Same purport can talk to us. This is the uniqueness of Prabhupada purports. So, Aaj ka din is a very special day, and I hope and I pray that all of you read Prabhupada books, including myself, every day. There should not be a single day in our life when we don't recite a Bhagavad Gita or a Bhagavatam purport. Make that conviction to ourselves. Every day, even if you have to repeat the same verse, every day we should repeat one Bhagavad Gita verse and one Bhagavatam verse every day of our life. There is, that should be our conviction. There is not a single day where we don't take a breakfast or drink water, which is, inconsequential. So, but we can make that every day I'll read Prabhupada books. Every day I will chant one Bhagavad Gita verse, और अगर इस तरह से करेंगे, आपको वर्स याद होने शुरू हो जाएंगे हमें. Okay, for 20 days repeat a single verse of Bhagavatam or Bhagavad Gita. Every day while doing Thakurji's seva or doing something else,
put something, with a tag, that blue tag, or something with a double side tape. Put a verse and repeat it whole day. Repeat, and you'll see that after some time Krishna will reciprocate, because he'll say they are serious people. They are not doing lip service. रोज पढ़ रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, पर भागवत नहीं पढ़ रहे हैं. रोज भगवत गीता कह रहे हैं कि भगवान ने वचन दिए हैं, श्रुति स्मृति दोनों है, पर व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, पर पढ़ता कोई नहीं है. बस ये दूसरों में नहीं है. इट इज फॉर अदर्स टू रीड, बट वी आवरसेल्फ, स्पेशली जो लोग प्रचार करते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है कुछ पढ़ने का. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. और मैंने बताया कि हमारे तो भक्ति वर्ष का नाम ही प्रभुपाद कृपा संघा है. सो आंख के अंदर नाम नयन सुख, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ. सो वी शुड हैव दैट कनेक्शन, एंड दैट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट विद अस टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद प्रभुपाद लोटस फीट, एंड विल फाइंड रिलिशमेंट, जॉय, ब्लिस इन आवर लाइफ, जो कभी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा. ये तो अभी ट्रेलर मिल रहा है हम लोगों को, हम सब शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ. बट इमेजिन अ डे फुल ऑफ ब्लिस, होल डे, so that awaits us just by accessing his books. So lamba ho gaya. So thank you so very much, and also thank you so very much everyone for sharing your heart, and Krishna willing we will continue this glorification tomorrow also. Thank you so very much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva patita nam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Tirubhav Mahotsav ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Prabhuji. Krishna.